Hey everyone, let's start with today's topic, which is DNA polymerase. So what is the function of DNA polymerase? DNA polymerase catalyzes the synthesis of DNA. So it catalyzes the synthesis of DNA. सो डीएनए पॉलीमरेज आपका रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसमें मेन एंजाइम जो है एज ए यूज़ होता है, एज ए मेन एंजाइम यूज़ होता है। डीएनए पॉलीमरेज आपका 2 टाइप का होता है। डीएनए पॉलीमरेज ये आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड सेकंड इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट, सेकंड, template डिपेंडेंट, दैट मीन्स टेम्पलेट पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट टेम्पलेट चाहिए होता है उसे। एंड सेकंड होता है आपके पास टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स टेम्पलेट की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। सो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्दर आपके 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आप नॉर्मली क्या कहते हो, डीएनए पॉलीमरेज। एंड नेक्स्ट होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसे आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? डीएनए पॉलीमरेज synthesize a new strand of DNA on a DNA template. So ये आपका DNA है, DNA template है 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। सो ये आपका क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्टैंड है। ओके, सो टेकिंग it as a template, DNA polymerase will come here and it will start synthesizing the new strand, okay, in the 5 prime to 3 prime direction, okay. बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में आपका क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो ये स्ट्रैंड है, ये आपका क्या होता है, ये आरएनए स्ट्रैंड होता है, आरएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आपके पास यहाँ पे आएगा एंड ये इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, हियर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका डीएनए सिंथेसाइज करेगा, ओके। सो डीएनए पॉलीमरेज को जो सेकंड नेम है, इसका अदर नेम है, इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase, okay. And reverse transcriptase, इसका अदर नेम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है उसमें आपके पास टेम्पलेट जो होता है वो डीएनए स्टैंड होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में आपके पास जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो आरएनए होता है, आरएनए स्टैंड होता है। सो टेकिंग एज ए आरएनए स्टैंड टेम्पलेट reverse transcriptase, it will synthesize the new strand of DNA in the 5 prime to 3 prime direction. सो रेप्लिकेशन जो आपका होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। सपोज दिस इज योर स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड है ये, बेसिकली पेरेंट स्टैंड है, एंड ये आपका है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड। अगर यहाँ पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज आता है, वर्क करता है, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, न्यू स्टैंड आपका बना देगा। सो न्यू स्टैंड की जो डायरेक्शनलिटी होएगी वो आपकी इस तरीके से होएगी। सो यहाँ पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज है, सो ये आपके पास यहाँ पे न्यू स्टैंड जो है इस डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ओके। सो these are the different category of types of DNA polymerase.
Next, there are multiple types of DNA polymerase that are found in both prokaryotic and eukaryotic, but there are more DNA polymerase in case of prokaryote as compared to the eukaryote. So here DNA polymerase in case of DNA polymerase in prokaryotes. Let's discuss DNA polymerase, different type of DNA polymerase in case of DNA polymerase in case of prokaryotes. So there are number different DNA polymerase that are categorized as DNA polymerase 1, DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4, DNA polymerase 5. So there are 5 types of DNA polymerase that are found in case of prokaryote if we talk about replication process. So basically this one, that is DNA polymerase 3, it is the main enzyme that is used in the replication process. So let's DNA polymerase in case of eukaryote. DNA polymerase in eukaryotes. So यूकैरियोट्स में आपके पास बेसिकली थ्री टाइप्स के आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, विच इज नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, एंड फर्दर यहाँ पे 2 आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, sorry, epsilon. So DNA polymerase epsilon. So now these are the different type of DNA polymerase in case of prokaryotes, which is DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4, DNA polymerase 5. In case of eukaryote, DNA polymerase are of 5 types: DNA polymerase alpha, DNA polymerase beta, DNA polymerase gamma, DNA polymerase delta, DNA polymerase epsilon. So these are the different DNA polymerase that are used in the replication process, but only because there are numerous DNA polymerase, only 1 or 2 of them will be used in the process of replication, either in prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryotes, DNA polymerase 3, it is the best studied DNA polymerase enzyme for the replication process. In case of eukaryotes, the main enzyme is the delta and the alpha.